Hello and welcome to the weekly current affairs class. Today we'll be discussing about whatever important happened in the fourth week of January. ठीक है? तो whatever important I found is the Padma Awards 2024 were announced on the 26th of January. ठीक है? They'll be awarded this Padma Shri in March or April at Rashtrapati Bhavan by the President of India. Okay, so about the Padma Awards, these are of three types: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri. And the names and the notification was put out by the Ministry of Home Affairs and the Government of India. So the important about J&K is that two people from Jammu and Kashmir UT, namely Ghulam Nabi Dar and Romolo Ram, have been awarded Padma Shri for their promotion of art. What type of art? Ghulam Nabi Dar deals with the art of wood carving, who is from Srinagar, and Romolo Ram, who is a Dogri folk singer. Okay, so these two have been awarded, the Padma Shri award. So they have made the Union Territory proud. Moving forward, India Aging Report 2023 is out, and Jammu and Kashmir has been regarded as the highest life expectancy UT after 60. That's the population after 60. The old age population has the highest life expectancy post 60 in J&K UT. And apart from this, Jammu and Kashmir has the lowest poverty rate when it comes to the old age people. Okay, so about this India Aging Report, it was put forward jointly by the UNFPA India, which is also known as the United Nations Population Fund, okay, along with the International Institute of Population Sciences. So some important things that were brought out in this report were: India's elderly population is growing rapidly and with a decadal growth of around 41%. अगर हम ऐसे देखिए, by 2050 इंडिया की around 20% of population will be elderly, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है. यानी by 2050 we need to be prepared for this, for the demography as such, in which 20% of the Indian population will be elderly. Apart from this, इस रिपोर्ट में बहुत सारी recommendations भी दी गई थी with respect to the old age, जो कि national level पे implement करने के लिए recommend किया गया था, and finds relevance with respect to the J&K as well. उसमें से कि लैक ऑफ क्रेडिबल डेटा है, और उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो बहुत सारे सर्वेज होते हैं, सेंसस होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं, उनमें ऐसी चीज़ें भी ऐड की जाए जिससे क्रेडिबल डेटा मिल सके रिगार्डिंग द ओल्ड एज, ताकि बेटर पॉलिसीज़ वगैरह फ्रेम की जा सके. अपार्ट फ्रॉम दिस, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है ओल्ड एज के लिए, उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट की जाए अमंग द ओल्ड एज पीपल, और जो ओल्ड एज होम्स है उनको एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म के अंडर लाया जाए. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, मल्टी जनरेशनल हाउस होल्ड में रहने को प्रमोट किया जाए. यानी मल्टी जनरेशनल, जहाँ छोटे बच्चे भी हो, पेरेंट्स हो, उनके पेरेंट्स हो, ताकि मल्टी जनरेशन को जब प्रमोट किया जाता है, इट हैज़ बीन फाउंड दैट द old age people are better taken care in multi-generational household. So this was about the India Aging Report 2023. Moving forward, we in Sleepy classes are offering JKPSC holistic course regarding the pre and mains of 2024 at a discounted price of 9,999, जिसमें से will be including topic wise lecture and Jammu and Kashmir specific content compilation. Apart from this, Jammu and Kashmir specific current affairs या subject wise करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, और इसके अलावा विल बी हैविंग रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशंस, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दिस, यू विल बी एडेड इन अ सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप, जिससे यू विल बी इन सिंक एंड यू विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द फैकल्टी एंड यू विल स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग द कोर्स. सो दैट्स इट फ्रॉम मी. सी यू नेक्स्ट वीक. थैंक यू.